सो जब कोई प्लेयर या कोई भी चैंपियन बनता है तो वो अकेला नहीं, उसके साथ उसकी मम्मी, उसके पापा, उसका भाई, सब खड़े रहते हैं. From the Garden State, New Jersey, from one mom to another, it's time for Mom's Talk. Here's Avni. Welcome, Supermoms, to Mom's Talk. I am your host, Avni, and our today's Supermom guest is Neha Saxena. Welcome to the show, Neha. Thank you so much, Anu. Thank you for having me here. My pleasure, Neha. So we have a badminton player, a national badminton player with us. Yes. When did you get introduced to badminton? When I was very little. My father was a sports person. He wasn't a sports person, sports lover, I would say. मैंने उनके जैसा कोई नहीं देखा. We were living in a very small town in India. It's like Dhar. It's a very small city, and there were no badminton courts. But my father somehow dreamt that me and my brother would be world champion someday. He was that kind of man. Yeah, he was. Have you seen the movie Dangal? Yeah. My father was somehow he was like that only. To wake us up at 4:30 in the morning, he would got up at 4. He chalo utho, time ho gaya. He was like that. So I got into badminton because of him. It was all his vision. My brother started first, and उसको देख के मुझे बहुत encouragement आया. उसको देख के he was so good. People like 10 साल में he was state champion. Wow. Yeah, state champion for Madhya Pradesh. So I was so proud, and I was like, this is the thing that I want. And luckily, my family was very, very supporting. Being a girl child, I never faced that problem कि मैं लड़की हूँ तो मुझे ये नहीं करना है. They equally supported me in badminton, and that's how my journey started. And I became state champion. I played for country, and I got Eklavya Award for state honor. Wow. Yeah, me and my brother both, in fact. So amazing. This is why I got my job. I joined railways in 2001, I believe. Yeah, 2001. Yeah, I was in Mumbai Churchgate in railways for a few years before coming here. तो कैसा था नेहा? आपने बताया आप सुबह इतनी जल्दी आपके डैड आपको उठाया करते थे. Was it difficult for you? I know you did mention that you looked up to your brother, that he was playing so well, और आपको वहां से हुआ कि आपको करना है. मगर कुछ मुश्किलें आई थी आपको इस करियर को परस्यू करते हुए? बहुत ज्यादा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोशल चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज. सोशल ऐसे कि being a small town girl, people will talk about you because you are a girl playing with boys, wearing shorts, going out. So that's a big thing in my town. Like, आप अकेली ही लड़की थी वहां पर? मैं पहली लड़की थी. वाओ. तो इसीलिए जब मैं शॉर्ट्स पहनने ही बड़ी बात थी वहां पर कि, और उन लोगों को लगता था कि यार लड़कों के साथ हाउ कैन like their parents allowed, but my parents were very confident. They raised me in such a way that मुझे कभी उनसे कुछ छुपाने नहीं पड़ा, कभी भी. तो जब स्टार्ट किया, my dad was like lower middle class. I belong to very low income family, but उनका ड्रीम बहुत बड़ा था मेरे डैड का. But the way my mama supported it is amazing कि उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों हम इतना पैसा बच्चों में डाल रहे हैं. एंड शी ओनली हैड 5 साड़ी. उनके पास 5 साड़ी थी, बहुत ही कम पैसों वाली, लेकिन हमको वो जूते 2000 रुपए के पहनाते थे. ये उनका डेडिकेशन था कि हमको मुझे आज भी याद है कि हमको एक बार मी एंड माय ब्रदर बोथ वन स्टेट चैंपियनशिप, हमको कुछ 40-50 हजार रुपए मिले. तो आई डोंट नो, फॉर सम रीजन मैंने मम्मी को बोला कि ज्वेलरी बनवा लेते हैं इसकी आपके लिए. मम्मी ने कभी कुछ नहीं लिया आपके लिए. Suddenly daddy came and said
शटलकॉक मंगवा लेते हैं इसकी, बिकॉज शटल बैडमिंटन स्पोर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव. तो एंड मामा सेड यस यस प्लीज डू दैट, वो दैट विल हेल्प यू. मतलब मम्मी के मन में कभी डाउट नहीं था, कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि ये मुझे चाहिए. शी वर्क सो हार्ड कि हम लोगों को 5 बजे उठना है तो 4 बजे उठ के शी मेक मिल्क रेडी फॉर अस कि बच्चों को खिलाना है. रात को कितनी बार ऐसा होता था कि मैं 11:30-12 बजे हम लोग घर आ रहे हैं प्रैक्टिस करके, बिकॉज वहां पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी. एक बैडमिंटन हॉल भी नहीं था, एक बड़ा बड़ा सा हॉल था लाइब्रेरी का जिसको हम पहले झाड़ू पोछा करते थे. एंड देन वी यूज टू स्टार्ट प्लेइंग देयर. और टाइमिंग्स डिवाइडेड थे, तो हमको जो टाइमिंग स्लॉट था, क्योंकि हम बहुत देर तक खेलते थे, तो सबसे आखिरी में मिलता था कि आप 9 बजे खेलना शुरू करो तो 11 बजे तक आप खेल सकते हो, 12 बजे भी खेल सकते हो, क्योंकि उसके बाद कोई खेलने वाला नहीं है. तो घर जाके भी आपको गर्म खाना मिलेगा. शी वॉज सो डेडिकेटेड फॉर अस कि मम्मी डैडी ने जो सपना देखा था मम्मी ने उसको पूरा करा. बिल्कुल सही बात है. आई वॉज अ फॉर्चुनेट किड बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ स्मॉल टाउन गर्ल, कि मुझे स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिला और मुझे इतनी सपोर्टिंग फैमिली मिली. तो ये बिल्कुल गॉड्स ग्रेस, या देयर वर लाइक आई एम द लकीएस्ट इन दैट मैनर कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले. बिल्कुल बहुत सही बात कही. थैंक्स टू योर पेरेंट्स नेहा. जितना सेक्रीफाइस हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, वो तो उन्हीं की वजह से हम हैं जहां पर हम हैं आज. एंड द वे यू हैव शेयर्ड, आई थिंक that's amazing. किस तरीके से आपको सपोर्ट किया गया, और वो सपोर्ट नहीं होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी चीज करना, उसमें आगे बढ़ना. एज अ मदर आई कैन फील इट कि मेरे बच्चे हैं. अभी मुझे व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू गो फॉर अ मंथ फॉर अ कैंप, नेशनल कैंप. 1 महीने के लिए आप एक 13, 14 या 15 साल की लड़की को मुंबई भेजना है आपको. सो हाउ वुड यू फील? आई एम अ मदर नाउ, आई कैन अंडरस्टैंड इट बेटर नाउ. पर ना मम्मी के दिमाग में ना मेरे पापा के दिमाग में कभी भी कोई डाउट नहीं था. हमेशा बहुत ही कॉन्फिडेंट थे हमको लेके कि नहीं, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन. सो जब कोई प्लेयर या कोई भी चैंपियन बनता है तो वो अकेला नहीं, उसके साथ उसकी मम्मी, उसके पापा, उसका भाई सब खड़े रहते हैं, तभी वो जो बनता है चैंपियन. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है नेहा. बहुत सही बात कही आपने. आपने बताया कि सोशली भी आपको काफी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी. आई कैन अंडरस्टैंड बीइंग द ओनली गर्ल अमंगस्ट द बॉयज. आप उस टाइम पर इस तरीके से खेल रही थी, आपके मन में बहुत सारी चीजें आती होंगी. I'm sure a big support from your family was always there with you. But internally, how did you fight with all those things in your mind and in your heart? वो एक टाइम बहुत बहुत डिफिकल्ट भी था जब अराउंड टीनेज जब मैं थी. वो सोशल प्रेशर कि लोग इन्फ्लुएंस में आके मेरे फादर को कुछ बोल जा रहे हैं, मम्मी को कुछ बोल जा रहे हैं कि अरे यू डोंट नो व्हाट योर डॉटर इज डूइंग बिकॉज आई एम अ गर्ल. भैया को कोई कुछ नहीं बोल रहा था. But being a woman, I was targeted most. You don't know what she's doing out there. How can you just leave your daughter outside with strangers? पर मैंने बोला ना, मेरा अपब्रिंगिंग ऐसा था कि I was very transparent with my parents. कि मेरी लाइफ में जो भी हुआ मैं उनको सबसे पहले बता देती थी. तो पहले ऐसा हुआ कि जब तक मैंने कुछ अच्छा अचीव नहीं किया तब तक सब लोग बोलते थे कि अरे I don't know what she does. पर फिर धीरे धीरे जब ट्रॉफीज घर आने लगी, न्यूज़पेपर में नाम आने लगा, टीवी पे मैच आने लगा, घर में बहुत सारी ट्रॉफीज और जानने लगे लोग, तब बिल्कुल अपोजिट हो गया. दे सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग. दे सपोर्टेड मी लाइक यार ये तो हमारे सिटी का गौरव है. मतलब आई यूज्ड टू बी ट्रीटेड वेरी स्पेशल. स्मॉल टाउन एक बेनिफिट भी है कि आपको सब जानते हैं. सब जानते हैं, आप किसी के घर जाओ, डॉक्टर्स ऑफिस जाओ, nobody will like let you stand in the line. Just go, please come. आप वेलकम करेंगे, आपको आपका सम्मान करेंगे. तो that was a big thing from being targeted, from being what do you call, honored. So that was the journey. You earned it Neha. You earned it, and with your family's support, आपके parents ने इतना जो आपको support किया,
Because of all those things, you earned that. Thank you. तो जब ऐसी कुछ चीजें आपके साथ में होती थी नेहा, which used to put you down, तो उस समय आप वो पॉजिटिविटी आपके माइंड में किस तरीके से लाया करती थी? क्या आप शेयर करती थी? आपने बताया अपने पेरेंट्स के साथ, बट हाउ इंटरनली did you come up with that positivity within you to keep going? Because it needs a lot of focus. जब आप कोई स्पोर्ट भी खेल रहे हो तो बहुत फोकस की जरूरत होती है, ये सारी चीजें आपको उससे दूर ले जाती है, तो वो कैसे किया? That's a very good question actually. So मैंने बोला ना कि हार्डशिप जब लाइफ में आती है ना, that makes you stronger. So वो जो हार्डशिप आपके साथ आपको मिलती है, उसके बाद you become more confident. तो जब ये सब कुछ हो रहा था, no matter how much support I was getting from my family, but I had to face it. So I kept my focus only on badminton. I loved that sport so much कि मुझे कुछ ना दिखाई देता था ना कुछ सुनाई देता था. मतलब देयर वाज लाइक, अभी मैं बताऊं कि मैंने स्मॉल टाउन की थी, मैंने बाहर दुनिया नहीं देखी थी. आई यूज्ड टू ट्रैवल अलोन ऑल ओवर द इंडिया, और रेस्टोरेंट में जाके खुद ऑर्डर करके खाना, अकेले बैठ के खाना. मुझे क्या खाना है मुझे पता है, मुझे आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. सो आई वॉज वेरी फोकस्ड. सो माई लव फॉर माई स्पोर्ट kept me going. And one more thing that I want to tell you, that sport made me so much confident in whatever I do, whatever I am. Like my personality is because of my sports only. It's like अगर मैं अपने लाइफ से स्पोर्ट्स को निकाल देती हूँ तो I would be someone else. I'm not that person today. So yeah, that was the thing that kept me going, that I really loved badminton so much. I think I can relate to Saina Nehwal's the movie that was based on. You've played with her. Yeah, I did. Amazing. Yeah, Hyderabad, and I said this very proudly कि मैं उसके साथ खेली हूँ मैं हैदराबाद में, और we had very very tough match that time. Really? She was a junior player, but yeah, I lost to her, but yeah, it was a very close call. That's amazing. यही बात है ना स्पोर्ट्स की कि कोई भी कंपटीशन की इनफैक्ट मजा तब आता है जब हर कोई एक लेवल का हो, एंड दैट्स वेयर द रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम टू. एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि बिकॉज आई केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था जब हम नेशनल लेवल पे खेलने लगे. तो मैं डर जाती थी, खेलती नहीं थी. मतलब मीनिंग मैं हार जाऊंगी बिना अपना 100% दी. I was like that person. So there was a time where I was feeling really down कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, and I can see that I'm better than other person, but still I'm not winning. Why I'm losing? Then I realized one thing, that when I'm playing match, I'm not enjoying the game. There is a constant pressure of winning the game. That's why I'm losing. So then I started looking at it another way, that I'll give my 100% no matter what, even if I lose the game. I should be like कि मुझे होना चाहिए satisfaction कि मैंने 100% खेला और मैं हार गई. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बिना खेला हार गई क्योंकि मैं जीतना चाहती थी. So then when I started thinking like that, things changed. I started winning. And I enjoyed There it. you go. I was more focused because I was loving it. Like मुझे सब बोलते थे चिपकू प्लेयर है, छोड़ती नहीं है शटल. Like I never used to give up. No, that was not my thing. I never. Last point पे मैंने कितने बार गेम जीता है कि I was down 10-2, and from there I won the game. So I never. I would love to see you playing, Neha. I wish we had recording that time, but nowadays we all have camera phone in our ourselves, but that time hardly any pictures or recordings. So I would like to share this with my daughters as well कि देखो ऐसे खेलती थी मम्मा. बिल्कुल बिल्कुल जरूर. आई थिंक आपने बहुत सही बात कही है नेहा कि हारना जीतना
तो it's the stars need to be aligned. You have to be in that time zone which is your time, that particular second. वो हमारे हाथ में नहीं है, but हमारे हाथ में है to give our 100%. Yeah. And another thing I loved what you said was that you figured out, you cracked it. आपने बताया आप नहीं खेलती थी, आप घबरा जाती थी ये सोच करके कि you're gonna lose. But when that thing is out of your mind, you're enjoying the play, when you're not worried about winning or losing, that's when you get 100%, 100% out of you. Right. If you are giving your 100%, doesn't matter if you lose or win. It is going to make you happy that you have given your 100%. So that's what it matters. ये बात ना बोर्ड के एग्जामिनेशंस जो बच्चे दे रहे होते ना उनको बतानी बड़ी जरूरी है. So yeah, right. No, that's so true what you just said, and I think that's where you got this confidence from, and you kept on winning. Thank you so much. तो आपका बैडमिंटन खेलना बंद कब हुआ? When I came here, क्योंकि मेरी शादी के बाद भी I was playing when we were in Mumbai, but after my marriage I was there for only 9 months. So by that time I was playing. I was going for my practice. In fact, I have participated in a few tournaments after marriage. So there was, when I came here, there was no badminton. Like most people do not even know that it's a sport. मैंने जब पूछा यहाँ पर इनिशियली तो लोगों को पता भी नहीं था. मैंने कहा यार come on, it's like क्या बोल रहे हो. तो स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ था नहीं तो हुआ नहीं. फिर I was like कि वो तो चीज थी ना अंदर की फिटनेस का कीड़ा था अंदर. तो I started doing some random stuff like running, random exercises, because I wasn't a planned trained athlete for strength training that time. So gradually I learned, and बीच में मैं 2 साल इंडिया होके आई, in which things have changed drastically for me. I have met some amazing people there. I have learned proper strength training there. So that's how I continue doing that. It's doable and I'm really enjoying it. तो आपके बच्चे जब हुए उसके बाद भी आपने ये चीज हमेशा, the strength training, keeping yourself fit, you've always not exactly continue doing that? First, my elder daughter, she's 11-year-old. तो उसके होने के बाद में चीजें बहुत जल्दी बदली. I was at a time I was really depressed because I did not know how to live without a passion. क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम तक बैडमिंटन से जुड़ी हुई थी, तो there was some passion in me. So I just lost it. So I was clueless. तो थोड़ा टाइम लगा समझने में क्या करना चाहिए. But एक बार ऐसा हुआ कि when I was like climbing stairs, and 2 story के बाद में I was like, my breathing were high, and I was like, shit, I'm like I'm in my 30s. I shouldn't feel like that. I'm too young for this. And I'm like, I'm not that girl. I like to be a strong person. I just don't want to be that कि भाई कैसे भी करके काम निपटा देना. नहीं, मुझे अच्छे से करना है, जो भी करना है. तो फिर then I start growing interest in fitness, and I was looking for it, reading for it, and gradually मैंने start किया अपना journey, और thankfully doing okay now. That's amazing. Neha, आपने बताया it was kind of difficult for you, and I can understand, इतने busy schedule में से निकलना, उसके बाद में अचानक से कुछ भी नहीं, लोग वो स्पोर्ट के बारे में जानते भी नहीं है. Exactly. ऐसी नई जगह पर आना. As well, right? Nobody knows you. जब मैं उधर थी तो everybody, like every other day my name was in newspaper. People like I was the top, and nobody knows me. I'm lost. So it was difficult time, but exercise beats that negativity. It gives you that confidence, and
literally matlab, it's not for your physical only, it's here as well. It's kind of meditation for me, that it makes me happy. So it is now very important thing in my life. तो आपने क्या सोचा कि जब आप यहाँ पर आई, आपका बैडमिंटन तो बंद हो ही गया था, but yes, you were into strength training, you continued that, but apart from that, did you think that I should go into some other field to keep myself busy? Like many others, they kind of change their fields, they get into something else. Yeah, but there are responsibilities, and I chose the homemaker like myself here. I was the one who decided. So चीजें मुश्किल हो जाती हैं, मतलब it's not that simple, क्योंकि you have responsibilities here and no help whatsoever, कि अगर आपकी कोई parent भी अगर यहाँ पे हो तो भी बहुत फर्क पड़ जाता है. So but you have to find a way कि आपको कहाँ से कुछ सही रास्ता मिल जाएगा. तो ये मेरा रास्ता था कि मैं I can take care of home, I can do my stuff, I can encourage motivate other people to do the same, because I can see that what strengthening brings to your life. I can see that. तो इसीलिए I was content कि ठीक है, I can manage my home, I can do my stuff, I can see my girls growing up, I can do everything in this. So this is why that's very important. Yeah. It's very important to understand what keeps you happy, what makes you happy, right. Whether you are a homemaker or you are a working woman. That's right. जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपको खुशी देता है, वो चीज करनी जरूरी है. अब कोई काम, जिसको काम करना अच्छा लगता है, उनको आप कहो कि आप कुछ भी मत करो, तो वो खुश नहीं होंगे. नहीं होंगे ना. सही है. You know, it's very important for us to kind of understand ourselves, where our happiness lies. Exactly. और वो satisfaction अगर आपको मिल गया तो फिर उससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती है. That's the most important thing today, right? To be happy. Exactly. नेहा, अगर आपको अब जब आपने सही तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे की जाती है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में है, you've been doing that. I think you are much more stronger now, and you've also passed through that phase. Yeah. जहाँ पर there were ups and downs. You've come out of it stronger. Yeah. अब अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए वापस बैडमिंटन में जाना, to live your life as a player, as a badminton player, I will definitely start badminton, and moreover I'll start coaching. Because I have learned so much growing up about badminton that I can definitely teach other kids how to play badminton, and definitely will start. I can do that. Like, I would love to do that. So I'm looking forward to it then, Neha. Yeah, sure. Someday. Badminton Academy run by Neha Saxena. No, it's nothing like that. Not the academy, but yeah, if I can teach a few kids, that would be wonderful. नेहा, आप एक national level badminton player रह चुकी हैं. You are doing your strength training. That is something that you have continued doing. You are a mom to two beautiful daughters, and you yourself had an amazing mother that supported you throughout your life. Yes. What would be your message for the other moms? Okay. Okay. Encourage your children to play sport, first thing. And second, take care of your health. If you are a strong mom, your children are watching you. If you're a strong and fit mom, your children will watch you, and they will just get it from you. You don't have to tell them anything. They can get it from you just like that. You don't have to tell them that you should be fit or take care of yourself. Taking care of your health is the most important thing for women. I've seen my mother actually कि उसने
अपनी हेल्थ को कभी प्रायोरिटी नहीं रखा है. हम बच्चों की हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी दी है. लेकिन I would encourage all the mothers to take care of their health, do exercise, strength training mainly, do yoga, like any kind of exercise is fine. So take care of your body. It is going to stay with you forever. So please take care of your body and stay healthy. Lovely, lovely, Neha. Very nice message. One more thing I wanted to ask you. If you think of your younger self, the younger Neha playing badminton, are there some of the things that you would like to change? Not a thing. Not a thing, because whatever I am today, because of those experiences, so I wouldn't change anything. So to my younger self, I would advise just one thing: live the moment. I missed out so many things because I was worrying too much about future. So I would just advise myself to focus more on what I love, that was badminton, and don't worry about what people say. There was some time when I was really concerned about others thinking, but I would say just don't worry, just go for it. You're doing good. Lovely, lovely, Neha. It was such a pleasure talking to you. Thank you so much for giving So much, giving Abhi. me your time. You were so good at it. I mean, I really enjoy talking to you. Hi, this is Avni from Mom's Talk. Help me spread the word and join me on my mission of motivating other moms by sharing the video. Thank you for watching.